back to another amazing lab of Google Cloud Arcade program in which we will doing this lab building a high throughput VPN. So first let's start the lab and open it in an incognito window. After this you just have to agree and continue and also do I understand. Okay. So सबसे पहले हम टास्क 1 की तरफ जाते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि सबसे पहले हम क्लाउड शेल से शुरू करेंगे तो हम जाके क्लाउड शेल को स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें भी हमें कंटिन्यू एंड ऑथराइज करना होगा टू मेक इट वर्क। क्लाउड सेल के ओपन हो जाने के बाद हमें कमांड्स को रन करना है। पहले हम इस कमांड को रन करेंगे। जिसमें हम एक वीपीसी नेटवर्क बना रहे हैं। नेक्स्ट हम फायरवॉल रूल्स को क्रिएट करेंगे। हमने इस कमांड का यूज किया। नेक्स्ट हमें एक सबनेट बनाना होगा, उसके लिए हम इस कमांड का यूज करेंगे। एंड यस, इट्स आल्सो कंप्लीटेड। अब हम टास्क 2 पे आ जाएंगे जिसमें हमें सबसे पहले इस कमांड को रन करना होगा, जिसमें हम एक और वीपीसी नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। आफ्टर दिस हम फिर से फायरवॉल रूल्स क्रिएट करेंगे। एंड देन हम सबनेट्स को सेटअप करेंगे यूजिंग दिस कमांड। नाउ दैट द कमांड्स आर completed, अब हम एक बार चेक माय प्रोग्रेस को रन करेंगे टू चेक इफ it has been completed. And yes, we have created 2 custom VPCs in this task. Now for task 3, we will create uh, a gateway, VPN gateway. All right. We created VPN gateway named on-prem GW1 in the on-prem VPC network in this particular region. We will also create this VPN gateway for this VPC network in this particular region. इसके बाद अब हम टास्क 4 पे आ जाएंगे जिसमें हमारे पास इस तरीके से सबसे पहले आईपी एलोकेट करना होगा फॉर क्लाउड GW1 VPN gateway, and it has been created. Next हम वही सेम चीज दूसरे VPN गेटवे के साथ करेंगे। एंड नेक्स्ट
हम अब इन कमांड्स को रन करेंगे। सबसे पहले हमें इस कमांड को रन करना है फॉर क्लाउड GW1 गेटवे, एंड देन हमें इस कमांड को रन करना है फॉर द नेक्स्ट गेटवे। आफ्टर दिस हमें फॉरवर्डिंग रूल्स बनाने होंगे, जिसके लिए हम इस कमांड का यूज करेंगे सबसे पहले। एंड देन नेक्स्ट हम इस कमांड का यूज करेंगे टू फॉरवर्ड द UDP 500 ट्रैफिक। इसके बाद हम इस कमांड का यूज करेंगे टू फॉरवर्ड द UDP 4500 ट्रैफिक फ्रॉम क्लाउड GW1। यह हो जाने के बाद हम एक बार ESP प्रोटोकॉल को फॉरवर्ड करेंगे ऑन प्रेम GW1 गेटवे। आफ्टर दिस हम फिर से UDP 500 ट्रैफिक को फॉरवर्ड। आफ्टर दिस हम एक बार चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे and we have successfully created two VPN gateways. Now we will create VPN tunnels. Now for the second one, इसके बाद हम एक बार ट्रैफिक को राउट कर देंगे from on-prem VPC to cloud using this command, and then हमें वही सेम चीज क्लाउड VPC के साथ करना है। सो हम इसे कॉपी कर लेंगे एंड इधर कंसोल में रन करेंगे। आफ्टर दिस एक बार हम चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करके चेक करेंगे। Alright, so we also created two VPN tunnels. Now it's task 5 where test throughput over VPN. So we will run this first command. Here we are creating a compute instance, and then we will run this command to create another
virtual machine instance. After this, this is the name of the VM instance, the zone, and these are its specifications, as you can see. Next, हम हर VM में SSH करके उसमें ऐसे करके इंस्टॉल करेंगे. So after it is created, you have to minimize this and then go to VM instance. Now, अब आपको इसमें SSH में क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपके पास SSH का एक विंडो ऐसे ओपन हो जाएगा जिसमें आपको इसे ऑथराइज करना होगा. ऑलराइट, कभी कभार ऑथराइज नहीं भी करना होता है. नाउ अब हमें इस कमांड को इसमें पेस्ट करना है. जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है हम एक बार इधर आ जाते हैं. ऑलराइट, तो हमने जिसमें SSH किया है ये है एक्चुअली क्लाउड लोड टेस्ट. सो क्लाउड लोड टेस्ट के लिए हमें इस कमांड को रन करना है. आफ्टर दिस एंड द कनेक्शन हैज फेल्ड, we will try again. Okay, first let's do it in the on-prem load test. We will SSH into this instance as well, and we will use the same sudo command first and then the command which was made for it specifically. Next, हमें इधर आके ऑन प्रेम लोड टेस्ट पर इसे ट्राई करना होगा. Alright, connection has failed for this one. Well, let's close this and this one as well, and then let's just start from the on-prem load test. We first run the sudo command, then we will run this specific command for the on-prem load test. After this, we will SSH into cloud load test. Use the sudo command and then we will use this one. And yes, it is set up. I will check my progress. And yes, it's a success.
Now the lab is completed, but once again, before ending this lab, we will check out if we have correctly done all the steps. Yes. Now we can end the lab successfully. Wishing you all the best. If you like this video, please give a like and subscribe for more such videos. Thank you.